there is a problem in this topic, that is category management. So I'm going to start with this. Okay. So basically, what is the meaning of category management? What is the meaning of that? Let's start with this point. So category management क्या है? It is defined as the retailer supplier process of grouping of product. यानी कि जो category management है, ये एक process है in which what is done there, the products are grouped according to their nature and according to their features. They are grouped and उनका एक categories जो है वो separately बनाया जाता है, अलग अलग category. For example, if there is a grocery item, we are going to put it in the different category. If there is a apparel, we are going to put it in the different category. If there is a crockery items, we are going to put it into the another category. So basically the category जो management है, ये क्या है? ये एक तरीका है, एक मैनेजमेंट एक तरीका है, एक प्रोसेस है जहां पर जो रिटेलर सप्लायर का ये प्रोसेस है. और रिटेलर और सप्लायर का ये प्रोसेस क्यों है? जस्ट वेट फॉर अ मिनट. हाँ, बिकॉज जो ये तरीका है प्रोडक्ट को ग्रुप करने का, इफ द रिटेलर्स आर परचेजिंग इट फ्रॉम द होलसेलर, सो दे आर ग्रुपिंग इट, ठीक है, and after that they are going to sell it to the consumers, and it is very much efficient to the consumer. If they want to purchase the grocery, they are going to go to that particular department, right? So it is basically a way or a process of separating the product, separating the different product in different categories. Okay, and what is basically done, they are basically using a different strategic method for selling all these products. For example, if you are selling the grocery item, maybe your बोल सकते strategy is different for selling it. If there is an apparel, the strategy for selling that particular thing is different. So according to the categories, we are going to use the strategic process for that. ठीक है. Next one is why this category management is made. क्यों category management होता है और क्यों इसकी जरूरत क्यों है? So the first reason is for focusing on productivity, like how many product and of which category is sold. So how we are going to get the information about it. If everything is in the separate form, if every product is according to its nature, it is in category, we are able to understand the performance of the category. कि ये पहला जो category grocery वाला, इससे मुझे इतना benefit है. Second apparel है, इससे इतना benefit है, इसका इतना number of units sale हुआ है. So for this purpose, for understanding the productivity and efficiency of the retail, this way of category management is helpful. The second one is consumer need. So definitely, जो consumer की जो requirement है, according to the category, they are going to visit it, they are going to purchase it. So in short, for the customer value, for convenience of the customer, for understanding the productivity of the retail store, category management is required. So category management क्या है? It is a process of separating the product according to its nature, and it is a retailer supplier process. ठीक है, यानी कि retailer के पास supplier के through product आता है and then they are making it category. So this is category management, right? What is the meaning of category? जो इतना देर से हम लोग management की बात कर रहे हैं. So management is the process. It have some steps, right? It is used for the implementation. If we are talking about the category only, कि category क्या होता है? So category जो एक distinct group है of the product which is separate from the one another. Example में obviously we all knows that the flour means जो आटा है आपका, वो आपके कपड़ों से बिल्कुल अलग होता है. So category we are making according to the nature. So category is defined as a distinct group, different group that consumer perceive to interrelated substitute in fulfilling a consumer या customer's need. So category क्या है? In short, बस इसको याद करना है, तो you all can write that it is a distinct groups of product. It is a distinct group of the product. Consumer को मिलता है, provide होता है, और consumer अपनी need के हिसाब से they are purchasing and they are visiting the different department or categories in the store. So this is category. Clear हो गया? What is category? What is category and where it is required? If the question is asked that where the category management is required, where the retailers are selling more than one type of product, in that situation the category management is required. जहाँ एक टाइप का प्रोडक्ट सेल करे, एक नेचर का प्रोडक्ट सेल करे, in that situation we will do the category according to the, like if we are selling the clothes, so we are going to make the different category according to the main women and the children.
इस तरीके से हम कैटेगरी बना सकते हैं, लेकिन वो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट विल बी सिमिलर काइंड ऑफ, राइट, but the category management is more optimal, or it is more potential, and it is more utilized in the situation where there are more than one type of product. Nature of product जो vary करेगा, category management की requirement उतनी ज्यादा increase होती जाएगी, ठीक है. So I guess this point is clear to everyone. And one more thing, it is also helpful for the brand identification. Once you will make the category, and within the category, if you are dividing the product, like आप लोगों ने देखा होगा कि एक बिग बाजार चले जाओगे तो वहां पर एक ही जगह पे, अगर नीचे के पूरे एरिया में आपके ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ क्लोथ्स का एरिया है, तो वहां पर फॉर द डिफरेंट ब्रांड यू विल गेट द डिफरेंट एरियाज फॉर दैट. So it is also helpful for the brand identification and for increasing the brand knowledge, for the convenience of the customer, for बोल सकते हैं for saving the time of the customers, and for fulfilling the need, and for increasing the productivity. This category management is required. Clear हो गया सबको, everyone? Yes, everyone, the point is clear? Okay. Next one is what is the basic features? What is the basic features and principle of category management? What is the basic features or principles of category management? Just wait for a minute. What is the basic features or principles of the category management arrangement? So the first one is जो category management है, it is different from the brand management. So in the case of the brand management, what we are doing, that in a one specialty store, if there is a brand like Levi's is there, if there is a Killer, if there is a Lee Cooper, multiple brands are there. So in that situation, we are basically categorizing the product according to the brand. But here in the category management, they are talking about to categorize the product according to its nature, according to its function, right? So the first point is saying that category management is different from the brand management because it is main focusing on the types of product rather than its brand. Okay, if we are selling, if a departmental store or if any store, it is selling sauce, okay, जो हम लोग खाते हैं, तो sauce में multiple varieties है, multiple companies हैं, like किसान का है, Maggie ka hai, and I think Tops ka, there are multiple brands for that, but they are going to categorize the sauce in only the grocery item, right? They are not going to differentiate it according to it is of the Tops, so we have to keep it here, it is of the Maggie, to yahan rakhna hai, aise nahi karna hai. We are categorizing the product according to the function, according to the feature, and according to its nature, right? And we are not, it is somehow different from the brand management. Second one is it emphasizes on the particular category of the product rather than the individual brand. So ये एक product category को define करता है, ठीक है? अगर एक जगह पे dairy product है और वो सिर्फ आपकी grocery और eatable items में है, so it is not differentiating that is it is of Sudha or it is of Amul or it is of the another company, but they are basically showing that these all are paneer, है ना? These all are the dairy product. So this is somehow the category management is, basically this is the principle of the category management, that it emphasizes on the category of the product of the similar nature rather than the individual brand. यानी ये brand focused system नहीं है, बल्कि ये product focused system है, जहां पर हम product पे focus करेंगे, ना कि उसके brand पर focus करेंगे, right? If the person have to purchase the pasta, that person is going to purchase or choose from the grocery area, but that person is not going to see it if the different brand is in different area, right? Next one is it intended to enhance the customer loyalty. It intended to enhance the customer loyalty. Okay, what is the meaning of customer loyalty? Customer loyalty in the case of the retailer, the person, if the person is visiting the same store every time, they are doing the repeat purchase, so that person is known as the loyal customer for the retail. So the loyalty is of the different aspects. Some people are loyal toward the brand, some people are loyal toward you, means to the retailers. So in the retail concept hum kahenge, so that person is loyal because that person is visiting the same store for purchasing the product. Clear ho gayi baat? Samajh mein aaya everyone? This point is clear? Every yes, student? हाँ. So ये enhance करता है customer loyalty को, इसका दो reason है. पहली चीज, the customer are never in dilemma or confusion. Why they are not confused?
because whatever is provided by that retail store, they are arranging it in the proper way. If the person have to do the grocery का shopping करना है, clothes का shopping करना है, तो उसे हर जगह पे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाएगा, परचेज करेगा, बिलिंग कराएगा और वो आ जाएगा, है ना. सो कन्वीनियंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एज वेल एज जो ज्यादातर बड़े रिटेल स्टोर होते हैं, खास करके आपके जो organized retail hai, they are always providing the offers and all. So because of the offer and price, the customers are loyal. Customer can be loyal, but because of the facility, convenience facility, they will become loyal. और ये बढ़ाता है कस्टमर की लॉयलिटी को. ठीक है, जब आपको आपके लिए शॉपिंग इंटरेस्टिंग हो जाएगा तो कस्टमर्स जाएंगे शॉपिंग करने, लेकिन अगर वही हेक्टिक हो जाएगा द पीपल विल अवॉइड. सो यह हेक्टिक सिचुएशन को हटाना है, डिलेमा और कंफ्यूजन वाले सिचुएशन को हटाना है कस्टमर के लिए, और कस्टमर को ऑप्शन देना है कि जो भी प्रोडक्ट खरीदना है, यू कैन गो टू दिस डिपार्टमेंट, यू कैन गो टू दिस डिपार्टमेंट, यू कैन गो टू दिस डिपार्टमेंट, राइट. सो इट इंटेंट मतलब इट इंटेंडेड टू एनहांस द कस्टमर लॉयलिटी. द सेकंड वन इज इट एम टू एनहांस द रिटेलर्स एसेट. ठीक है, तो रिटेलर्स के बेनिफिट को इन शॉर्ट ये इंक्रीज करता है. नेक्स्ट वन इज इट एम्फसाइज ऑन मल्टी प्रोडक्ट परचेज, देयर बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी. तो कहीं ना कहीं इट इज हेल्पफुल. For what? It emphasize on the, some of the students are coming at this time, and if you all are thinking that my work is complete, it emphasize on the multi-product purchases, thereby reducing the risk of dependency. So in short, if you are going to a particular store and you have to purchase multiple items, so you have an option to purchase it from the departmental store, or you can purchase it from the nearby organized store. And if there is a multiple categories of the product, you can purchase everything from one single roof. ठीक है, एक ही छत के नीचे you will get everything, right? So ये कहीं ना कहीं आपके ये मतलब ये emphasize करता है कि आप multiple product purchase करें, और ये reduce करता है risk of dependency, मतलब आप दूसरे जगह पे dependent हो किसी product के लिए. So इस चीज को ये कहीं ना कहीं minimize करेगा, because you will get everything in that particular store whatever you want to purchase, right? And this is very much in the departmental store or the hypermarket, because they are selling each and every item from in that single roof. एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी. सो कैटेगरी मैनेजमेंट जो है वो ब्रांड मैनेजमेंट से डिफरेंट है. सेकंड है, ये आपका कैटेगरी पे, प्रोडक्ट पे इंफसाइज करता है, ना कि ब्रांड पे. सो इट इज अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, नॉट brand oriented approach, right? The second one is it enhance the customer loyalty because of the facility which is provided by this particular category management. It is making a retail more easy. It is making a overall image or goodwill of your retail store, that everything is in a proper arrangement, so people will purchase very quickly and they're not wasting their time. So that's why the customer will become more loyal. The next one is that it is helpful for enhancing the retailer's assets. Okay. Next one is it emphasize on the multi-product purchase. So in a one store, once you will visit the store, because of there are multiple category, you will purchase everything from that store only. Your dependency on the other retail store will be reduced. So there is a reducing the risk of dependency. Next one is that it intended to increase the customer satisfaction and enhance the customer value. So obviously, if you will get everything in a single roof, in a convenience manner and in a low cost, so in short, it is going to help the consumers to get satisfaction, right? The customer will be more satisfied in basically purchasing the product from the store where there everything is properly managed or categorized. Next one is the data. Fundamentally, the data is based on the trading area need and characteristics. So it is related with the supplier and the retailer. कि जो data वगैरह trading वगैरह का है, that will be properly managed under this. And हर एक category जो होगा, they have their separate strategic business unit. So I already told you that they have a strategy or planning. जो भी इनका होगा, अलग-अलग department के लिए अलग-अलग होगा, according to the number of customers and according to demand of the product, right? And each category have their own strategic business unit. Okay, so this point is clear. This point is clear. Everyone, this yes, point is clear. Okay. Okay. Next one is
product retail approach, and the second one is consumer focused approach. There is a one basically diagram which is there in the page number 957. You all are able to see that. So product retail approach में यहाँ दो तरीके का सिस्टम है. प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, तो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट हम कैसे करेंगे, नया प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइस टैग्स एंड स्टॉक कीपिंग यूनिट्स के बेसिस पर. ठीक है. प्रोडक्ट रिटेल अप्रोच में आपका एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करेंगे, न्यू ब्रांड कौन सा है, कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट खत्म हो रहा है, रिप्लेनिश हो रहा है, तो न्यू स्टॉक लेकर आना है उस बेसिस पर, और कैटेगरी कैप्टन के बेसिस पर. ठीक है. प्रोडक्ट मिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड इन द कंज्यूमर फोकस्ड अप्रोच अगर रहेगा तो आप मार्केटिंग सपोर्ट जैसे क्वालिटी, कन्वीनियंस, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आफ्टर सेल सर्विस पे फोकस करोगे, और इधर कम्युनिकेशन पे फोकस करोगे, कस्टमर लॉयलिटी पे फोकस करोगे, एडवर्टीजमेंट पर और पॉइंट्स ऑफ सेल्स पर. सो हियर द कैटेगरी मैनेजमेंट हैव टू अप्रोचेस. The first one is product retail approaches and the second one is the consumer focused approach. In the product retail approach, we are going to do everything according to the product. किस बेसिस पर हम करेंगे, प्रोडक्ट के बेसिस पर करेंगे. जैसे प्रोडक्ट को सॉर्ट करना, बांटना, कौन कौन सा न्यू प्रोडक्ट है उसको देखना, डिफरेंट प्राइस, कौन प्रोडक्ट का क्या प्राइस है वो देखना, टैग्स को देखना, मतलब डिफरेंट प्राइस टैग्स को देखना, stock keeping units को देखना. So all these things are going to be done in the product retail approach. Manage inventory management, new brand replenishment, everything in the product retail approach. Consumer focus में हम ये सब कुछ, आपका marketing हो गया, आपका CRM हो गया, customer relationship management हो गया, आपका sales services हो गया, advertisement हो गया, शेल्फ मतलब रिटेल में जो आपको एक स्पेस दिया जाता है जहां प्रोडक्ट आप रख सकते हैं, तो शेल्फ स्पेस, ये सब कुछ आपकी कस्टमर ओरिएंटेड में आ गया. और दिस इज गोइंग टू वर्क हाउ. सो प्रोडक्ट मिक्स मतलब टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑल द कैटेगरीज एंड द बेसिस ऑफ फीचर्स एंड फंक्शंस. प्रोडक्ट मिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इट मींस दैट फ्रॉम वेयर द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर टू द कंज्यूमर. एंड आफ्टर दैट इन द मार्केटिंग सपोर्ट सर्विसेज लाइक क्वालिटी वगैरह में मार्केटिंग सपोर्ट सर्विसेज के बेसिस पर, और कम्युनिकेशन जो होगा वो प्रमोशन और कम्युनिकेशन के बेसिस पर. और ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, इनहांस करेगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एंड इट इज हेल्पफुल फॉर कैटेगरी ग्रोथ एंड द ग्रोथ ऑफ द रिटेलर्स. सो दिस इज व्हाट दिस डायग्राम इज सेइंग. Okay, so there is some process, category management process is there. Okay. There are total 8 steps. There are total 8 steps. Okay. First one is a category definition. When you are going to do the category management करना है तो सबसे पहले category को define करना है, सब category को define करना है. ठीक है. तो प्रोडक्ट में जैसे आपके अगर FMCG गुड के बेसिस पर अगर आप कैटेगरी बना रहे हो तो here the some things are there, टॉयलेट सोप, सॉफ्ट ड्रिंक, परफ्यूम्स. और उसके अंदर भी अगर आप कैटेगरी बना रहे हो तो परफ्यूम ये रहेगा, सोप्स ये रहेगा, लॉन्ड्री का सामान ये रहेगा. सो दीज थिंग्स नोन एज द सब कैटेगरी. ठीक है. सो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द कैटेगरी और यू हैव टू एनालाइज द फंक्शंस एंड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है. once the category is defined, that the soap will go to the FMCG, the soft drinks or these things are going to the eatable. So FMCG में eatable items भी आते हैं, packaged items वगैरह. So according to that we are going to define the category. Once the category definition is clear, then there is a category role. ठीक है. So what we are going to do in this one, to identify the role and importance of the various categories. ठीक है. So यहाँ पर आपको देखना है कि हर कैटेगरी का क्या रोल है. मतलब इट मे बी डेस्टिनेशन, रूटीन, सीजनल, कन्वीनियंस, राइट. सो आपका जो कैटेगरी रोल क्या है कि ये सीजनल बेसिस पर आपने कैटेगरी बनाया है. जैसे विंटर के लिए बनाया है तो विंटर सीजन के सारे प्रोडक्ट आप कैटेगरी में डाल रहे हो, राइट. सीजनल बेसिस पर है या रूटीन बेसिस पे, यानी हर दिन वो प्रोडक्ट को आपको वहीं पर प्लेस करना है या रूटीन है वो. ठीक है. convenience के basis पर है. So what is the role of category? Why you are making that? For the seasonal sale, for the convenience, for the routine, or for the destination. So it is going to be defined in the second one. The next one is category assessment. So you have to analyze the current performance of the category, including sale, profit, customer satisfaction, customer value, and contribution.
सो वंस द कैटेगरी इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एंड रोल, ठीक है, देन यू हैव टू डिफाइन द फंक्शन रोल से हो गया, नेक्स्ट यू हैव टू डिफाइन द, यू हैव टू असेस द कैटेगरी परफॉर्मेंस, ठीक है, सेल्स कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, कंज्यूमर का वैल्यू, इन सब बेसिस पर आप असेसमेंट करोगे, ठीक है, एनालाइज करोगे, ठीक है। उसके बाद डेवलप द स्कोर कार्ड। सो यहाँ पर आप एक साउंड और ऑब्जेक्टिव सिस्टम के साथ मेजर करोगे परफॉर्मेंस। पहले में कैटेगरी डेफिनेशन होगा, रोल डिफाइन होगा, फिर असेसमेंट करेंगे कि कौन सा कैटेगरी जो है वो कितना प्रॉफिट देगा, क्या कंट्रीब्यूशन होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू डू असेसमेंट। वंस द असेसमेंट इज डन, वी आर गोइंग टू, जैसे कैसे आपका स्कूल या कॉलेज में असेसमेंट टेस्ट होता है, so once the assessment is done you will get the report card. So same here, you will get the score card in which it will measure the performance of the category, like grocery वाला में इतना, apparel में इतना, बाकी अगर electronics से इतना, तो like this we are going to manage the system, we are going to give the performance date. Once the score card is done, then we'll make category strategies, ठीक है। So for the overall growth of the category, we are going to make the strategy for the different categories. We are going to make the strategy according to the performance and scorecard. ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो strategy और tactics में फर्क होता है, strategy is always made for the long term goal, ठीक है, tactics is for the short term, है ना। सो यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि लॉन्ग टाइम तक जो है आपका वो कैटेगरी से बेनिफिट और ये सब चीजों से मतलब सेल वगैरह कर सकें आप। नेक्स्ट है आपका कैटेगरी टैक्टिक्स। यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्लान बनाएंगे ताकि हर एक कैटेगरी में ना भीड़ हो, जनरेट करेंगे ट्रैफिक ताकि लोग आए और प्रोडक्ट को खरीदे। तो टैक्टिक्स में आपका सेल्स प्रमोशन बहुत ज्यादा आता है, जैसे आपने डिस्काउंट दे दिया, ऑफर दे दिया, कूपन दे दिया, कैशबैक दे दिया। So in that situation, the people are going to come to your retail store. Why? Because of the benefit or the sales promotion technique. So you can develop the tactics here, right? And after the tactics category plan implementation, then we are going to appoint the different people for the different department, right? According to their motivation, according to their knowledge and information, each department is going to basically given to the various people in the organization, right? And they are going to be motivated or assigned the responsibility. And then there will be the category review, that what we are basically क्या actual था, मतलब actual क्या performance था और target क्या था. So according to that we are going to take the corrective action. So पहले तो हमने category define करना है, we have to define the category. Then what is the role of each and every category, why we are basically categorizing, what is the reason behind it, and what are the ways of doing the category management. Category role is going to be, मतलब ये category role के अंदर आया. Then in the category assessment we are going to analyze the current performance of the category, मतलब जो current performance है, यानी कि जब आप category management कर रहे हैं उससे पहले जो आपके यहाँ already product है जो सेल हो रहा है, कैटेगरी मैनेजमेंट क्या करते हैं, विद इन द रिटेल स्टोर करते हैं, हम कैटेगराइज करते हैं चीजों को। अब जैसे कि मान लीजिए, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। अब जैसे मान लीजिए आपका ये रिटेल स्टोर है, this one is a retail store and everything is in a arbitrary form, like nothing is properly managed. So in that situation even your product is product जो है वो सेल तो हो ही रहा होगा। अब प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है तो उसका हम यहाँ पर एक असेसमेंट बनाएंगे, समझ रहे हो, क्योंकि हम कैटेगरी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आपका रिटेल स्टोर या तो कुछ क्या होती है ना, कुछ रिटेलर तो स्टार्टिंग में ही कैटेगराइज कर लेते हैं चीजों को, कुछ बाद में कैटेगराइज करते हैं। तो जब आप बाद में कैटेगराइज कर रहे हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डिफाइन करोगे कैटेगरी, कौन कौन टाइप का प्रोडक्ट हमारे स्टोर में अवेलेबल है। एक बार पूरा डिफाइन हो गया, फिर हर एक कैटेगरी का रोल डिफाइन करोगे कि यहाँ पर ये रखेंगे, यहाँ पर ये, और क्या क्या रीजन है कैटेगराइज करने का, ठीक है। फिर उसका कैटेगरी असेसमेंट करेंगे कि पहले मतलब जो ऑब्वियसली कैटेगरी को असेसमेंट करेंगे, क्या सेल हो रहा था, क्या हो रहा था, ये सब चीजें देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे, सेल वगैरह ये सब। उसके बाद फिर स्कोर कार्ड रेडी करेंगे सारे प्रोडक्ट के बेसिस पर कैटेगरी का। उसके बाद फिर कैटेगरी की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हर एक आपका कैटेगरी जो है किस तरीके से ग्रो करेगा ऑर्गेनाइजेशन में वो होगा।
And then after that category strategy, we are going to make the category tactics. So that is for the short term. Once the tactics is completed, then we are going to do the category plan implementation. मतलब category के लिए हम implement करेंगे plan को, and after that category review, right? Then we are going to review the each and every category. So I guess this point is clear to everyone. This Yes, point ma'am. is clear. Okay, so the category management जो है वो ये था, और इसके सारे steps और processes लगभग हो गए हैं. Let me see if something is left. So there is a model of category management in Indian scenario. Okay, so let us start with this. And there are some other reasons. यहाँ पर कुछ reason है that explain that why retailers are averse of this kind of system and not integrated category management program in their strategy. So पहली चीज है lack of commitment. Lack of commitment. The second thing is lack of vision. Poor planning skill, like the people are not able to plan properly. Commitment nahi hai. Fourth one is the opinion of the suppliers and retailers are different. Lack of information, the information is not there. And the setup cost, ये मानते हैं कि setup cost बहुत high होगा. उसके अलावा poor communication with the customer, so they are not able to communicate and they are not able to understand that what is the basically how they are going to satisfy. Like either if you're not giving them a properly product, अगर आप offer नहीं कर रहे हो, convenience उनके लिए नहीं है, तो वो satisfaction नहीं है. तो communication ही नहीं है, तो communication ही है, तो customers के problem से मतलब नहीं है. So poor communication is there. Poor shelf spaces and atmosphere. Shelf spaces का मतलब क्या होता है ना कि हर एक रिटेल स्टोर में प्रमोशन के लिए कई बार कंपनीज एक शेल्फ लेती है और अपने प्रोडक्ट्स को रखने के लिए मतलब प्रमोट करने के लिए बोलती है, राइट? सो सेल्फ स्पेस की भी प्रॉब्लम है. उसके अलावा जो प्रॉपर देयर इज अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस मैनेजमेंट और कैटेगरी मैनेजमेंट. सो बिकॉज ऑफ दीज रीजन द so many retail stores are still unaware about the category management and they are not following this process, right? Because for them it is a expensive thing. Second, the proper poor planning system है, poor planning है. फिर costly system उनको लगता है, फिर time taking system लगता है, customer के साथ proper communication नहीं है, shelf space की problem है, proper vision नहीं है, so they are not able to see the what is how it is going to be helpful. Like there is a lack of vision for this, that how this category management is going to help the people. It is not properly there in this category management according to some retailers. So that is one of the reason that so many Indian retail scenario, if we are talking about, they are still unaware about the category management benefits. So that is the one of the reason that, and there are so many problems as well. So इसलिए retailer थोड़ा avoid करते हैं category management. समझ में आया सबको? Everyone, this point is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And if we are talking about the category management in Indian scenario, तो इंडिया का जो रिटेल है आज भी आप में पता है कि मेजॉरिटी जो है 94% अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग सिस्टम है हमारे इंडिया में. खास करके हमारा जो इंडियन मार्केट है वो बहुत ज्यादा मॉम एंड पॉप शॉप से स्मॉल और ट्रेडिशनल स्टोर के इसका पैटर्न रहा है. यानी कि अगर आप आज भी देखो तो हमारे यहाँ वेंडर्स आपको दिख जाएंगे, छोटे मोटे स्टोर वाले आपको दिखेंगे, अपने घर के आसपास देखेंगे तो मॉम एंड पॉप स्टोर है, तो बहुत सारे आपको ऐसे स्टोर नजर आएंगे जो बहुत ही छोटे साइज में होती है, बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ, या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरी बट नॉट इन डेप्थ के साथ दे आर वर्किंग, राइट? सो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वे जो इंडिया में चल रहा है वो आज भी आपको नजर आएगा. बहुत सारे जो स्टोर है दे हैव अ वेरी स्मॉल फ्लोर्स एंड एरिया एंड फाइनेंस, यानी उनकी इनकम मार्जिन भी बहुत कम है, बहुत छोटा सा दुकान होता है, बहुत छोटा सा स्पेस होता है. और अभी के टाइम पे वी ऑल आर एबल टू सी दैट द स्टोर्स आर बेसिकली चेंजिंग देयर फॉर्मेट एंड दे आर इम्प्रूविंग, है ना? और कुछ बड़े बड़े रिटेल स्टोर भी आ गए हैं इंडिया में. अगर मैं बात करूं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैटेगरी मैनेजमेंट की इंडिया में, सो इट नीड्स अ विजन, रिसोर्सेज एंड कमिटमेंट. यानी इसको करने के लिए इनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए होगा.
दे रिक्वायर्ड द प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम इनके पास होना चाहिए, प्रॉपरली इनके पास कमिटमेंट होना चाहिए, रिसोर्सेस होना चाहिए, तभी जाकर के दे आर एबल टू इम्प्लीमेंट दिस कैटेगरी मैनेजमेंट. सो बिकॉज ऑफ दिस कैटेगरी मैनेजमेंट जो है ना कहीं वो इंडियन रिटेल सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड नॉलेज सो मेनी रिटेलर्स आर स्टिल अनअवेयर अबाउट द कैटेगरी मैनेजमेंट व्हिच आई टोल्ड यू अर्लियर. ठीक है. सो यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं कि जब आप कैटेगरी मैनेजमेंट करना चाहते हैं, इफ द ट्रेडिशनल जो फॉर्मेट है वो अभी भी डोमिनेटेड है और अभी भी वो इंडिया में जो है डिमांड में है, लेकिन अगर आप छोटे मोटे स्टोर भी अगर चाहते हैं कि दे वांट टू कैटेगराइज, सो देयर इज अ वन सिस्टम व्हिच इज हियर फॉर कैटेगरी प्लान इम्प्लीमेंटेशन इन द इंडियन मार्केट. सो मैन्युफैक्चरर को रिटेल के साथ कंसोलिडेट करना चाहिए, मैन्युफैक्चरर को ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करना चाहिए, रिटेलर्स को डेटा कलेक्ट करना चाहिए, और इन मतलब मैन्युफैक्चरर और सप्लायर को मिलकर के रिटेलर के साथ, ठीक है, कंसोलिडेट वे में काम करना पड़ेगा. मैन्युफैक्चरर ब्रांड अवेयरनेस का काम करेगा, रिटेलर्स डेटा कलेक्ट करेगा कंज्यूमर से, और फिर फाइनली वो कैटेगरी को डिफाइन करेंगे. वंस द कैटेगरी इज डिफाइंड, देन द कैटेगरी कैप्टन डिसीजन, मतलब कैटेगरी किस तरीके से बनाना है, देन इट विल बी डिसाइडेड एंड देन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड. बट स्टिल इफ यू आर टॉकिंग, जो भी कैटेगरी मैनेजमेंट जो है अगर आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लाना है, अप्रोप्रिएट पोजीशन पर लेकर आना है, सो दिस सिस्टम कैन बी यूटिलाइज. But still in India, this category management is very far from the Indian market. Okay, and आपके कुछ यहाँ पर रियल बेनिफिट क्या है कैटेगरी मैनेजमेंट का. सो इट द फर्स्ट इज थिंग इज लाइक यू विल गेट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. लाइक इफ यू विल गो टू store A and if you will go to the store B, in the store A if you want to purchase clothes, but because of the things are in very arbitrary way and you're not able to see the properly clothes, so it might be possible that you will go to the store B, and if you will get everything in a arranged way, in a certain way, or in a proper category, so it is going to differentiate the retails कि एक A रिटेल से B रिटेल कितना अलग है. So for the competitive advantages and for increasing the sale, the category management is required, and it is going to increase the customer value and the loyalty as well. It is also a tool for persuading the retailers to visit the store. समझ में आ गया? Everyone, this point is clear? Yes, ma'am. Okay. Anyone have any other doubt? Because there is a one more point, that is a retail promotion cycle. So in examination so many people write these thing in a wrong way. बहुत गलत लिखा था कुछ बच्चों ने, मतलब कुछ क्या बहुत सारे बच्चों ने. So let's move toward this, the retail promotion cycle. What is that retail promotion cycle? So जो promotional activity हो रहा है, मतलब it is retail promotion cycle is the promotion किस तरीके से हम कर सकते हैं retail store में, तो how we are going to promote it. So there are the तीन चीजों पे ये based है. One is why you are using the promotional tool in the retail. What is the reason behind it? So देखो, हर एक प्रमोशन जो भी आप प्रमोशनल टूल यूज करते हो उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ ना कुछ रीजन होता है. कंपनी ब्रांडिंग प्रमोटिंग क्यों करती है, प्रमोशन क्यों करती है? ताकि उनके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस हो, नॉलेज हो, लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदे, है ना. सो प्रमोशनल एक्टिविटी का जो मेन एफर्ट होता है, बिजनेस कम्युनिकेट करना चाहती है अपने पोटेंशियल कस्टमर से, और जो प्रमोशनल कैंपेन होता है वो कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू होता है ना. जो भी उनके टारगेट कस्टमर है उन तक ये अवेयरनेस इंफॉर्मेशन जाए ताकि वो प्रोडक्ट को खरीदे. ठीक है. और ये कहीं ना कहीं जो प्रमोशनल कैंपेन जब शुरू होता है तो वो ऑब्जेक्टिव के साथ होता है कि इस वजह से मैं प्रमोशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस कंपनी का, इस प्रोडक्ट का. उसके अलावा यू आर गोइंग टू डिसाइड द बजट एज वेल, बिकॉज प्रमोशन ऐसा है, कम्युनिकेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग फॉर द कंपनी, बहुत ज्यादा पैसा इनकर करना पड़ता है. तो यू आर गोइंग टू मेक द बजट, उसके बाद फिर आप करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, यूटिलाइजेशन देखते हैं प्रमोशनल कैंपेन के लिए. तो यहाँ पर जो रिटेल प्रमोशनल साइकिल या प्रोसेस है इसका 3 स्टेज है. First stage is deciding promotional objective. Then the second stage is deciding on these things. So some terms are there, and then evaluation of. So that the retail promotional cycle is based on these 3 things: deciding promotional objective, deciding on
and the next one is evaluation in terms of. So the first one is deciding promotional objective. तो यहाँ पर हम प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव देखेंगे, क्या रीजन है, क्यों प्रमोशन कर रहे हैं. तो सबसे पहले ब्रांड इक्विटी के लिए, ब्रांड इक्विटी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द ब्रांड. जैसे आज भी आप लोग सुनते हैं बजाज, जैसे ही बजाज आता है दिमाग में वैसे एक ट्रस्ट आता है कि भाई पंखा लेंगे, फैन लेंगे तो बजाज का ले लेंगे. क्यों भाई, बजाज तो ब्रांडिंग नहीं कर रही है, ना ही प्रमोशन कर रही है, बट स्टिल द प्रोडक्ट ऑफ द बजाज are still in demand. The reason behind it is brand equity. Once you are set in the market, once you are in the mature stage, now the people are aware about your brand, right? So for increasing the brand equity, brand value and brand goodwill. Second, for the footfalls, for increasing the number of the people in the retail store. So this is one of the reason. Next one is for the loyalty of the customers and for increasing the sales. So in short, these can be the objective for doing the promotion, right? Retail promotion का सबसे पहला यही आपका स्टेप है कि हम पहले प्रमोशन कर क्यों रहे हैं, उसको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे. या तो हम ब्रांड इक्विटी के लिए कर रहे हैं, या तो हम फुटफॉल्स के लिए कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ कस्टमर्स को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं, या तो लॉयलिटी के लिए कर रहे हैं कि जो आपके कस्टमर्स है वो लॉयल बने, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो, कस्टमर वैल्यू इंक्रीज हो, उसके लिए कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं. तो दीज कैन बी द ऑब्जेक्टिव. द नेक्स्ट वन इज डिसाइडिंग ऑन, हम किस चीज पे डिसाइड करेंगे. सो वी कैन डिसाइड ऑन द बजट. ठीक है, ध्यान देना है कि जो भी आप प्रमोशन कर रहे हैं उसका बजट क्या है ना, कितना पैसा इनकर होने वाला है. अब करोड़ में हो रहा है एंड यू आर नॉट इन दैट सिचुएशन वेयर यू आर एबल टू इनकर करोड़ में पैसा फॉर दिस प्रमोशन. सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो मेक द बजट, कितना रुपया खर्च कर सकते हैं. ठीक है, बजट देखना है. मीडिया देखेंगे कि इन फ्रॉम विच मीडिया वी आर गोइंग टू बेसिकली डूइंग द रिटेल वर्क. सो फॉर एग्जाम्पल वी आर एबल टू सी the आप Big Bazaar देखो, they are using the conventional way, like they are basically they are basically promoting their brand, promoting their retail store on the television lot. ठीक है, so we can say that which media is suitable for your retail store, you are going to select that. What message you are going to give, like Big Bazaar, they are always giving the message of that Wednesday this offer is there, like after purchasing of item of 2000 you will get 5 kg of rice or 5 kg of sugar, right? So you have to first understand that what is the budget, कितना रुपया खर्च कर सकते हैं प्रमोशन पे. Selecting the media, which one, conventional media, direct marketing, direct mailing, and so many retail stores are using the direct mailing concept, and it is a concept of direct marketing. तो जैसे आपने एक बार प्रोडक्ट खरीद लिया, हर बार मेल आता रहेगा. So this is a one way of promotion. So budget, selecting media. Third one is message देना क्या है. So majority of the retailers are basically promotion करने का मेन मकसद क्या होता है पता है, रिटेन होता रहे हमेशा दिमाग में. क्या इस पर्टिकुलर दुकान से कभी कोई प्रोडक्ट खरीदा था. अब जैसे मुझे लैपटॉप लिए हुए अपना, इट इज अराउंड 7 years, बट स्टिल आई एम गेटिंग द मैसेजेस फ्रॉम क्रोमा. सो इट इज नॉट, आई एम नॉट एबल टू फॉरगॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट आई परचेज माई लैपटॉप फ्रॉम द क्रोमा. सो भूल ही नहीं पाऊंगी कभी, राइट. सो फॉर रिटेंशन पर्पस, फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स एंड फॉर प्रोवाइडिंग द मैसेज रिलेटेड विद द न्यू ऑफर्स, नया ऑफर क्या है, डिस्काउंट, न्यू प्रोडक्ट क्या आया है, नया उनका ब्रांच ओपन हो रहा है, तो दे आर गोइंग टू गिव यू अवेयरनेस, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. सो मैसेज क्या देना है कस्टमर को, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा. एंड एग्जीक्यूट, हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट. सो दिस इज अ डिसाइड, इन सब चीजों पे डिसीजन लेंगे. ये सारा मकसद होगा, बेसिस होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, फुटफॉल, सेल्स और ये सब. ये आपका डिसीजन लेंगे बजट वगैरह पे कि फाइनली प्रमोशन करना है, लेकिन कितना रुपया लगा सकते हैं, क्या मैसेज भेज सकते हैं और किस तरीके से भेजें, किस तरीके से कम्युनिकेट करें. नेक्स्ट, आफ्टर दीज टू थिंग्स, प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव और डिसाइड करने के बाद बाकी बजट वगैरह सब चीजों को, देन वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट कि भाई इतना ऑब्जेक्टिव प्रॉपर सेट किया और एग्जीक्यूशन किया, तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या इफेक्ट है, क्या बेनिफिट हो रहा है, इवैल्यूएशन करेंगे, है ना. इन विच टर्म्स, इन द टर्म्स ऑफ सेल्स, कि कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है, उस बेसिस पर. ब्रांड इक्विटी क्या है, मतलब ब्रांड वैल्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा. ठीक है, फुटफॉल्स बढ़ा, पहले वाले डेटा से कंपैरिजन करेंगे. इवैल्यूएशन में ऑलवेज देयर इज द टू थिंग्स, एनालाइजिंग एंड कंपैरिजन. सो यहाँ पर सेल्स को देखेंगे, ब्रांड
इक्विटी को देखेंगे, ब्रांड वैल्यू पहले से कंपैरेटिवली कितना इंक्रीज हुआ है, अवेयरनेस कितना इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी कितना इंक्रीज हुआ है, और ट्रैफिक कितना इंक्रीज हुआ है. ट्रैफिक इन सेंस कि हाउ मेनी पीपल विजिटेड आवर स्टोर आफ्टर यूजिंग दिस प्रमोशनल टेक्निक फॉर 1 month, right? So after all these things, we are going to take the feedback and we are going to utilize this feedback for the retail promotion purpose. So I guess this point is clear to everyone. This point is clear. Everyone, these points जो भी करवाया क्लास में अभी. Yes, ma'am. सो प्रमोशनल साइकिल का कॉन्सेप्ट समझना, ये 3 चीज पे बेस्ड है. रिटेल प्रमोशनल साइकिल की बात हो रही है, राइट? और अगर क्वेश्चन में पूछते हैं ना व्हाट आर द प्रमोशनल टेक्निक, क्वेश्चन आ सकता है देखो ऐसे ना, तो क्या लिखना है प्रमोशनल टेक्निक में? तुम लोगों को तो पता ही होगा, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है? एंड पब्लिक रिलेशन इज द पार्ट ऑफ द पब्लिसिटी, तो यू कैन राइट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? रिटेल प्रमोशन का जो साइकिल है वो ऐसे चलता है. ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, बजट डिसाइड करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे. इवैल्यूएशन में रिजल्ट अगर प्रॉफिटेबल है, रिजल्ट अगर आउटपुट जो है वो पॉजिटिव है, सो इट विल बी अ डिलाइटफुल थिंग फॉर द रिटेल. इफ इट इज नॉट एज सच सेटिस्फैक्टरी, सो वी आर गोइंग टू टेक दोस फीडबैक एंड वी आर गोइंग टू मेक अगेन द रिटेल प्रमोशनल सिस्टम, ठीक है? फिर हम उस फीडबैक को यूज करेंगे अपने आगे के प्रोसेस और स्टेप्स के लिए फॉर द रिटेल प्रमोशन. क्लियर हो गई बात? समझ में आया? This retail promotion is clear. Who is going to tell me about this retail promotion cycle? Who is going to tell me about it? Who is going to tell me about it? Retail promotional cycle कौन बताएगा मुझे अभी? बताओ. एग्जाम के टाइम पे पढ़ेंगे, है ना? एक दिन पहले पता है मुझे. ओके, व्हाट इज द प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव? सो तो वही लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए हम बनाएंगे, ब्रांड इक्विटी के लिए बनाएंगे. सो दैट इज बेसिकली हियर, दिस इज टोटली डिफाइंड. So I guess this point is clear to everyone. This point is clear. Okay, let's move toward the another topic. Anyone have any doubt? So there are two, again there are promotional. जब बजट बनाते हैं ना, तो हम लोग यहाँ 2 चीजों का ध्यान रखते हैं. ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई ऑब्जेक्टिव में तो हम ब्रांड इक्विटी देखेंगे. ब्रांड इक्विटी का मतलब है ब्रांड वैल्यू देखेंगे कि हमारा ब्रांड का क्या वैल्यू है ना? सो ब्रांड वैल्यू, फुटफॉल्स, ये सब चीजें. बट जब बजटिंग और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, सो वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट टू यहाँ पर 2 मेथड्स है. पहला है ऑल यू कैन अफोर्ड मेथड एंड इंक्रीमेंटल मेथड. सो ऑल यू कैन अफोर्ड मेथड में क्या होगा कि जो रिटेलर्स हैं, दे विल स्पेंड द अमाउंट ऑफ द फंड ऑन द प्रमोशन अकॉर्डिंग टू देयर अफोर्डेबिलिटी. जितना पैसा खर्च कर सकते हैं उस बेसिस पे प्रमोशनल टेक्निक को यूज करेंगे. जितना हम पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे अगर छोटा रिटेलर है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है पैसा लगाना करोड़ में. So according to the affordability, they are going to use the money for the promotion. And the second method is incremental method. What is the meaning of that? कि यहाँ पर जो retailers हैं, they relies on the prior budget for the allocation of fund. A percentage is added, either added to or subtracted from one year's budget to determine the next year budget. So यहाँ पर जो रिटेलर्स है ना, that will be totally defined on the basis जो लास्ट ईयर क्या खर्च किया और अब क्या खर्च करेंगे. ठीक है, रिटेलर रिलाई करेगा पहले के बजट पर कि कितना पैसा पहले लगाया गया और उस परसेंटेज के हिसाब से इस न्यू बजट में उसको माइनस किया जाएगा. सो इन शॉर्ट इट इज ऑन द इंक्रीमेंटल बेसिस कि पिछले साल कितना लगाया, इस साल कितना लगाएंगे. सो these are the 2 things. Okay, and there are some retail promotional media का अगर बात करें तो यहाँ पर टेलीविजन है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, डायरेक्ट मेल एंड आउटडोर है. सो यू कैन यूज ऑल दीज थिंग्स. सो आउटडोर का मतलब होता है कि जब आप अपनी स्टोर के बाहर कुछ प्रमोशन करने के लिए कुछ बोर्ड्स एंड ऑल दीज थिंग्स यू आर यूजिंग, सो दैट इज बेसिकली अ आउटडोर. डायरेक्ट मेल क्या होता है, जहां पर वेयर यू आर डूइंग द वाइडर मार्केट कवरेज.
Then the magazines की अगर मैं बात करूं तो it is for the quality reproduction and the longer life prestige. Newspaper is for the higher market. ठीक है, coverage. Radio is for the high flexibility and for the ads and all it is suitable. And television is also for the wide coverage. So these things are basically mentioned here. Okay. So class,